fire. I think WAAYU's on fire. Congratulations and thank you all for being here, and an absolute honor. I genuinely feel it's a homecoming because it resolves a lot of problems, and they always say where there's a problem and if you can get a solution to that problem, that's when you're going to be super successful. So predicting that we are going to be super successful, I'd like to congratulate Anirudh and Mandar, and of course the entire team of Ahar, Sukesh, all of you, and the other associations that are here. Thank you so very much for being here. And this is the much needed support the restaurant industry has been looking for, and like they say, the aggregators making more money probably than the owners ever did. I come from a small Udupi background, and I know how difficult it was for Dad to manage that through his life. What we took home was just basics. And जैसे कहते थे ना, दूध खाना पीना वो सब सप्लाई हो जाता था घर में, और हम खा पी के खुश रहते थे. So I think this is one major step that will help all these smaller establishments and individual restaurants to grow. So congrats. And I think there's a Navy that's coming, and yeah, so I think the demo says it all and everybody's spoken. But why you? Everybody's saying why you? Why not somebody else? I guess because I'm also I've been a part of this industry. That's where I grew up. That's where I learned everything that I did in my life. And I honestly believe WAAYU for me, is like the Udupi restaurants that stand in Mumbai, dependable, hygienic, serving everything at the right prices. So I think WAAYU is that app that'll bridge solve the problem that restaurants are facing with aggregators. While the aggregators have done a commendable job, during the pandemic, there was a problem, and they came up with a solution. Now, when the solution has become a problem, you need another solution, and that's why WAAYU, and that's why zero commission. So when somebody is bleeding, if you can stop that bleeding, it'll help a hell of a lot, which means customers benefit, the restaurateurs benefit, the industry overall benefits. It's a very tough place with all the taxes that are there, the property prices, the prices of the products itself. The restaurant business is a very, very tough business. You need to work 24/7. When the world is partying, they're serving, they're working. And that's where I come from. When somebody tells me today, Suniel, 32 years in the industry, and you're still like a young, you're enthusiastic child, working, never say no to work, because that's my culture. So thank you to Anirudh and Mandar that they gave me an opportunity to be a part of this, because somewhere down the line, I also feel, I'm contributing in my own way through this app, but would probably make a difference to the industry. And so all I can say is thank you. Thank you, Ahar, for supporting it. Unbelievable. Thank you. Thank you to all the associations. I think we all need it. We all need it. We've all realized it. We couldn't fight them. But somewhere down the line, small beginnings only happen. So if Nitinji has said, now we'll go to Nitinji and say, yeah, Nitinji, we've come up with this. Now you support us further, and I'm sure he will. Likewise in the center. I'm very, very sure, because it's for the people, by the people. You can't go wrong. One India, one people. If I order from WAAYU app, I have to look for the healthy options. I'm a bad customer for them. But I have to look for healthy options. And when the restaurants are your partners, why worry about anything? That's the most important thing. Everybody talks about cash burn, cash burn. MSMEs bhi hai. हमारे बाप दादा भी थे जो रेस्टोरेंट चलाते थे, सक्सेसफुली चलाते थे, बच्चों को एडुकेट किया, उन्होंने सब कुछ किया. आज वो मार्जिन्स बाहर जा रहा है, and that has to stop. And the idea is that, so I think if you have to operate like a bootstrapped company, and when you take your restaurateurs as your partners, the customer base is already there. That's what you're looking for. And when you already have that customer base, they're the ones who are going to go out and say, यार मेरे तो 25% बच गया यार, मेरे लिए तो इतना बच गया. Restaurants will start offering their own schemes, to be able to push their food. They can afford to do that now. They can afford to add value to the products that they already have, which will make a huge difference. And in a city like Mumbai,
where everybody is working today, be it man, woman, everybody is working. I think the best form of advertising is the customer and the restaurants themselves. Nothing else can get you that kind of reach, and that is this. I think the entire burn factor has been left behind, and the old MSME form of business is being adapted, and that's why we'll adjust. इसलिए वायु के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हेरा फेरी होने वाली है. जो बाकी के पार्टनर्स हो आप सोचने वाले कि ये तो इतनी बड़ी हेरा फेरी हुई. और याद रखिए, जब मेरे से हेरा फेरी जुड़ता है तो एक पॉजिटिव वे में ही जुड़ा है. हमने एंटरटेन किया हमारे पहली फिल्म में भी. मैं बाकी कोई हेरा फेरी करता नहीं और बाकी हेरा फेरी से जुड़ता नहीं. तो ये हेरा फेरी ज़रूर होगी. जैसे कि मैंने कहा कि लोग आए, प्रॉब्लम के लिए एक सल्यूशन दिए, फिर वही प्रॉब्लम बने, तो फिर हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी ना. I think that is not true. If you see, the F&B and the travel business has grown multifolds post pandemic. Pandemic के टाइम पे ज़रूर तकलीफ हुई होगी, और क्योंकि deep pockets होते नहीं हैं, और brands ने individual brands चलते हैं, families businesses चलाती है, बाप बेटे बच्चे मिलकर ये चलाते हैं. I see it only increasing. Because experience जो restaurant का है वो अलग ही है. लोग भी चाहते हैं कि यार घर ऑर्डर करके खाने से अच्छा है कि हम बाहर जाके खाएं. वहाँ के एटमॉस्फेयर आप देखिए, रेस्टोरेंट्स बदल चुके हैं, उनकी इंटीरियर्स बदल चुकी है. और आज अगर F&B एक्सपीरियंस लेंगे आप मुंबई में, शायद न्यूयॉर्क और दुबई और ऐसे जगहों से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. Whereas we are far cheaper. We are far cheaper than the UK or the US, fine dining or other restaurants. So I don't think this is true. As a matter of fact, at home dining भी increase ही होगा because of apps like these. There could be WAAYU, there could be another app that comes. This kind of competition is very, very welcome, where the beneficiaries are the restaurateurs and the customers both. I don't know exactly. Somewhere down the line, the business plan may not be right. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये बिजनेस में आओगे क्योंकि ये चलता है, क्योंकि वो चलता है, ये यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा होती है. आज जो मेरे राइट में बैठे हो दिन भर सुबह 5 बजे चालू करते होंगे, रात को 12 बजे तक. मैं आज 100 इंडस्ट्री में अगर टिका हूँ पिछले 30 साल से, इट्स बिकॉज ऑफ माई स्कूलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. क्योंकि हमारे लिए कुछ गलत था ही नहीं. मेरे लिए सर्व करना गलत था नहीं, मेरे लिए कस्टमर्स को लिए दरवाज़ा खोलना गलत था ही नहीं. अगर कोई मुझे गाली देकर जाता था, पिताजी हमेशा कहते थे कुछ बोलना मत उसको, क्योंकि हमारी ऑडियंस थी जो कैप्टिव ऑडियंस थी, एक एरिया की थी. बाहर से लोग हमारे लिए वहाँ नहीं आते थे. तो अगर उसने मुझे कुछ कहा और मैं उससे चिढ़ गया तो मेरा एक कस्टमर कम होता था. तो हमने हमेशा कस्टमर एक्वायर करने के लिए सीखा है, हमने झुक के काम करना सीखा हुआ है. आई थिंक दैट्स व्हाट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टीचेस यू. एंड ओनली इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि नहीं मैं मेहनत करूँगा और आज टेक्नोलॉजी के द्वारा और भी आगे बढ़ूंगा, यू कैन सर्वाइव. वैसे तो हर बिजनेस में लोग खुलते हैं और बंद होते हैं. फिल्में कितनी बनती हैं, फिल्में कितनी अटकी पड़ी हुई है, लेकिन रिलीज वही होता है जो अच्छे होते हैं. तो आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस. I believe this is the best period for this industry, and I pray that there are a lot more apps like WAAYU that come in, follow this method and say, you know what, revenue streams अलग कर लेंगे, memberships कर लेंगे, लेकिन 30% की मार्जिन है, 30% शायद ही मार्जिन है, वो ही आप लेकर जा रहे हो तो आप क्या लोगे. जैसे कि मैंने कहा, हम लोग सर्वाइव होते थे क्योंकि घर से दूध, रेस्टोरेंट से दूध, रेस्टोरेंट से चावल, रेस्टोरेंट से वेजिटेबल्स, रेस्टोरेंट से सब कुछ आता था. तो पिताजी के एक चीज़ पता था कि फैमिली मेरी भूखी नहीं रहेगी, बाकी एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना था जिसके लिए वो मेहनत करते थे. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड एवरीथिंग इन माय लाइफ. आई थिंक इंडिया हैज गॉट अ ग्रेट टीम and these things continue to happen. I guess we all have to pray for his speedy recovery. He gets into surgery tomorrow and should be back soon and fighting. He's a sportsman, he plays for the country, so country above everything else, and I think no individual player is bigger than the country.
So WTC India has got a phenomenal team, an unbelievable amount of talent sitting on that bench there. So maybe it's that one more opportunity, for another boy to go there and shine. Rahul got the opportunity in the same way. I want everybody to pray for his recovery. That's about it. I mean, first of all, I've been lucky that nothing's gone wrong with any of the brands I've endorsed. It's also about a lot of luck. We go with a lot of faith. Everybody believes that what you're doing is probably right. See, I've never seen money over anything else. For me, money has never been important. The brand has been important. I may be wrong. I might make the wrong choices. But if you tell me ये करना, I'm very clear कि मेरे पास लाना भी मत. मैं बात भी नहीं करूँगा. लेकिन ये क्या है, मैं इस इंडस्ट्री को मैंने हमेशा बिलोंग किया है. मेरे पिताजी ने बिलोंग किया हुआ है. यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो रही है. और स्टार्टअप, और इसका मतलब ही ये है कि जब आपको एक प्रॉब्लम दिखाई देती, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है. क्या उसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आपके टेक पे, आपके मैनेजमेंट पे बेस्ड है. यहाँ एक छोटी सी टीम है, एक बहुत ही पॉजिटिव कंजर्वेटिव टीम, लेकिन पॉजिटिव टीम है. और साथ साथ जब एस्टैब्लिशमेंट्स ही आपके पार्टनर्स हैं, वो तो 30% पार्टनर्स ही हुए ना, क्योंकि वो ही उनकी बचत भी है. और उससे ना ही वो अपने कस्टमर्स को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन अपने रेस्टोरेंट्स के अपग्रेडिंग की भी बात कर सकते हैं कंटिन्यूसली. तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है कि उसी मार्जिन पे तो सब कुछ बसा हुआ है F&B इंडस्ट्री में. सो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर. अगर फेल भी हुए तो दोबारा कोशिश करेंगे, कुछ और करेंगे. जहाँ दैट्स व्हाई आई हैट्स ऑफ टू अनिरुद्ध, मंदार, Anna sitting here, Sukesh, for believing that they can make that change. And it's because it's only belief that can do it. And it's already happening. 1000+ restaurateurs already है. और अगर आप जैसे कस्टमर्स हुए, आप लोगों ने इसे एनकरेज किया, तो हो जाएगा. आज रेस्टोरेंट बॉयज़ की बात कर रहे हैं. मैं बोला हम डब्बे वाले को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? उनकी बहुत बड़ी टीम है. क्यों वो नहीं बन सकते वो लोग जो डिलीवरी सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं? दे हैव बीन द बैकबोन ऑफ मुंबई. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक करके हम इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं. लेकिन इसमें सबकी ज़रूरत होती है. एंड लाइक आई सेड, कैश बर्न को अगर हम अवॉइड करके कैश पॉजिटिव चले और एक MSME की माइंडसेट से हम चले, आई डोंट थिंक व्हाई वी कैन गो रॉन्ग.